All right, let's get started with this. X is this compound. Okay. Do you notice anything interesting about this compound? Look at the second carbon. The second carbon is attached to a hydrogen with OH and with methyl group. And that is a very good recipe for iodoform reaction. Or iodoform reaction kya hota hai? When you get a yellow precipitate, and that is what they're saying. Yellow precipitate ban raha hai. So that means this is what? Give the name of the compound formed as yellow precipitate, iodoform. And another name for iodoform, you know that iodoform is this thing: three iodides and one hydrogen. So you can also call it triiodomethane. You can call it that. Okay, give the name of X. X is a secondary alcohol. It is saturated otherwise. So it will be 4 carbons. So but2ol. You can also say 2-butanol. But2ol is also acceptable. There are 3 structural isomers of X. Structural isomer कौन से होते हैं? जिनमें ब्रांच होती है, वो चेंज हो जाती है. उनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, या उनमें हमारे पास placement of the functional group, position change हो जाती है. So 3 kinds of structural isomers: position isomers, chain isomers, and functional group isomers. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि they are all alcohols. That means कि functional group isomers नहीं है, they all have OH in them. तो अब इसका मतलब ये कि या तो आप ब्रांच को चेंज करेंगे या आप उसकी प्लेसमेंट को चेंज करेंगे. सो लेट्स से X है, मेरे पास 2-butanol है, मतलब मेरे पास 4 कार्बन्स हैं, ठीक है, और उनमें से सेकंड पे OH है. तो आई कैन मेक अनदर वन और मैं फर्स्ट पे OH डाल देता हूँ. दैट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर. सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज कि मैं बजाय इसके कि 4 की चेन बनाऊं, मैं 3 की चेन बना लेता हूँ और एक को ब्रांच में डाल देता हूँ. सो एक ब्रांच में आ गया और वहां पे OH लगा दिया. ठीक है. अगर मुझे वो भी नहीं करना है तो मैं 3 की चेन बनाऊंगा, उसमें एक ब्रांच में डाल दूंगा और फर्स्ट पे OH लगा दूंगा. सो यू कैन सी दैट आई हैव दीज आइसोमर्स. ये 4 की चेन में प्लेसमेंट चेंज की और ये 3 की चेन में प्लेसमेंट चेंज की. And based on that, I have these compounds. They have asked us for draw the structure of these 3 isomers. So usually when they say draw the structure, तो they're asking us for the structural formula. ठीक है. लेकिन आप अगर इस तरह से इसको ड्रॉ भी कर देंगे, स्केलेटल फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो that is also acceptable. Make sure you don't do this third one because this is already given to us in the question. Okay, we have Z here. Z has, as you can see, 2 alcohol groups and it has 1 chloride as well. ठीक है. Alcohols Sir, can be class. Yeah. sir, sorry to cut you off. Sir, एक सेकंड No पीछे जा problem. सकते हैं isomers. Yeah, sure. Sir, wouldn't the second one on the right and the last one be same? ये जो These two. जी नहीं सर, ये टॉप राइट वाला और बॉटम लेफ्ट वाला. ये और ये. जी सर. The difference in these is that this one is 2 methyl and 2 OH, and this one is 2 methyl but 1 OH. Alcohols can be classified as primary, secondary, or tertiary. Okay. Identify which is present here. So this one is a primary alcohol, so this is present here. This one is a secondary alcohol because ये carbon 2 के साथ attached है, so this is also present here. But there's no tertiary carbon, which means there's also no tertiary alcohol. Samples of organic compound ABCD are placed in unlabeled bottles. ठीक है. अब जरा देखते हैं. We have a carbonyl group. We have an aldehyde group. We have an alcohol group, and we have a carboxylic acid. So we have 4 different compounds. ठीक है. जिनमें हमारे पास different functional groups हैं. Now 2 of them have carbonyl, CO and CHO. One of them is carboxylic acid and one of them is alcohol. So let's see, question क्या कहता है. Identify all the compounds that contain a carbonyl. So that is A and B. So you have to mention both of them. अगर आप एक लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा. A to D are reacted separately with reagents given below. ठीक है, complete the table. अब tolerance reagent क्या होता है? Tolerance reagent is the silver mirror test. इसमें हमारे पास silver ions होते हैं, and if they oxidize the other thing, तो वो silver metal में convert हो जाते हैं. Of course, by losing an electron. And this is a weak oxidizing agent, which means it does not work on alcohols like ethanol.
ठीक है, but it will work on aldehyde. So the compound identified with this is B because it will give us a silver mirror या silver precipitate, दोनों आप लिख सकते हो. Alkaline solution of iodine. Alkaline solution of iodine is a test for iodoform. And iodoform कहाँ पे काम करता है? When you have a carbon that's attached to methyl with hydrogen and hydroxide. So that is ethanol or a secondary carbon. तो हमारे पास यहाँ पर that is going to be So C. So C will definitely work. ठीक है, so C iodine के साथ react कर जाएगा. But I'm just thinking because it's alkaline, OH है इसके पास, तो this will also react with this reaction, CO. और ये reaction हमने did we study the nucleophilic addition? I think we did, aldehydes वाली. So this is that one. Because you have an alkaline solution, तो ये उसके साथ react कर जाएगा with the carbonyl group in the presence of inductive effect from two carbons. So तो इसकी वजह C से नहीं आएगा. C और A दोनों दोनों. और इससे हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा क्योंकि आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है. Sodium metal, of course, sodium metal is going to react with acids. Now there are two compounds here that show acidic properties. This one is relatively strong, मतलब comparatively, although दोनों weak ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसकी निस्बत ज्यादा acidic है और ये उतना acidic नहीं है, लेकिन still this is acidic to some extent. So C and D both will lose H positive and they will both form compounds. In the case of ethanol, this H positive goes, so you're left with sodium ethoxide. And over here, this H goes, so you're left with sodium ethanoate. So हमारे पास दो different products बनेंगे. But in both of them, we will get hydrogen gas. So इसकी observations हमारे पास क्या क्या हैं? दो हो सकती हैं. One is that sodium disappears या dissolves. And the second one is that bubbles of gas that pops in a flame. Okay? All right, moving on. The structure of V and W are shown. Okay. Name the class of compounds. Again, class of compounds क्या है? Alcohol है. और कौन सा वाला alcohol है? So this one is one carbon that's attached to one more carbon. क्योंकि you can see that these two are in the branch of carbon. तो ये carbon इसके साथ attached है. तो इसकी वजह से this is a primary alcohol. Exam में आप 1 degree ना लिखना, exam में पूरी बात लिखना that this is a primary alcohol. And W is going to be a tertiary alcohol. Okay, all right. V and W both react with sodium metal. ठीक है, they're both obviously going to act as an acid. Write an equation for the reaction of V with sodium. So you just have to identify which hydrogen will react. So it is going to be this hydrogen. So you will get V, CH3 plus sodium metal. It will form the whole thing, hydrogen gas बनेगी, half mole बना लेते हैं उसकी. And then this whole thing, CH3, CH2, 2, CH2, Na. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ माइनस और यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं, even though that's not strictly required, but आप लिख सकते हो अगर आपने लिखना. Name a reagent used to distinguish V from W. अब ये क्या है कि we have a tertiary alcohol and we have a primary alcohol. Now, does anybody recall कि tertiary or primary alcohol की कौन सी properties different थी? Is there a reaction that primary alcohols can do but tertiary alcohols cannot? Oxidation. Primary alcohols can oxidize but tertiary alcohols cannot oxidize. तो इसका मतलब है कि we will use an oxidizing agent and we will see कौन सा oxidize होता है कौन सा नहीं होता. Secondary करते हैं oxidize? Yes, secondary can make ketones. So yeah, so we can use a strong oxidizing agent जैसे कि potassium dichromate. So acidified potassium dichromate, K2Cr2O7, and this will go orange to green with V because it is oxidized, and this will be no change because वो मतलब react नहीं कर सकता. PCl5 can be used to convert alcohols to halogen alkane. This is nucleophilic substitution. ठीक है. Write an equation for
ethanol with PCl5. ठीक है, so ethanol C2H5OH plus PCl5. Now you know that this will create एक ClOH की जगह पे आ जाएगा, एक ClH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और O बाकी उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो POCl3 बन जाएगा. So these are three products that we get. One Cl comes in place of OH, one Cl goes with hydrogen, and the remaining just joins with oxide. The type of reaction, this is nucleophilic substitution, but उसने हमसे mechanism नहीं पूछा, उसने हमसे सिर्फ पूछा है कि what is the type of reaction. So that's why I'm saying substitution. अगर वो पूछता describe the mechanism, तो फिर मैं इसे nucleophilic substitution पूरा लिखता. ठीक है? Again, I would not say, अगर वो भी तब भी मैं इसको SN1 या SN2 शायद ना लिखता. उसकी वजह थी कि अगर SN1 और SN2 बताना होता तो हमें पूरी डिटेल 4 मार्क्स का मैकेनिज्म ड्रॉ करने का बोलेगा. Isoprene is a structural isomer. Prenol, okay. यहाँ पर क्या है? A series of reactions shows how isoprene can be used to form Q, a sweet-smelling compound. Sweet-smelling compounds are usually esters. ठीक है? So definitely यहाँ पे कोई esterification reaction हो रहा है Q में. But let's see हो क्या रहा है. Isoprene में हमारे पास दो चीजें. One is the alkene. The alkene group, the moment you see carbon-carbon double bond, तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? You should remember that it has electrons that are in the pi cloud, which are very reactive, and they are interested in finding anything that is even slightly positively charged. तो उसको वो अटैक करते हैं और उस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है यहाँ पे. अच्छा, सिमिलरली OH है. OH में हमारे पास दो मेन रिएक्शन हो सकते हैं. एक एसिड वाला रिएक्शन हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन हो सकता है. OH की जगह पे कोई और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए. ठीक है? सो ये हमारे पास दो मेन sites हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है. Of course, there is a third reaction that can occur. That is when you have the CH2 and CH3 and all of these. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है फ्री रेडिकल वाली. तो तीन डिफरेंट रिएक्शन हमारे सामने हैं जो हो सकते हैं. ओके, so now what are we doing? We are doing reduction here. So reduction का मतलब ये है कि double bond will break down because of electrophilic addition. So all that's going to happen is that these carbons will get the hydrogen. Okay, so we will get this and we will get this thing. So what is the reaction? We are doing reduction. Okay, and this is creating a saturated compound. और इसका नाम होगा 1 2 3 4 and the third one has a methyl, so 3 methyl butanol. Okay, और 3 methyl but 1 ol भी आप लिख सकते हैं इसको. Sir? Yes. Sir, why wouldn't this be 2-methyl but 4-ol? Because the OH group should be the main functional group here. तो counting वहां से start होगी. Okay. Isoprene is a liquid. Ni acts as a catalyst for reaction 1. Identify the type of catalysis. The type of catalysis, there's two kinds: homolysis, homogeneous catalysis and heterogeneous. Homogeneous is when the catalyst and the substance, they are all in the same phase. Here we have heterogeneous, because nickel is solid, but this is a liquid. So we will say this is heterogeneous. Okay. Draw the skeletal formula of Q and suggest one commercial use of Q. Let's see Q में हो क्या रहा है. इसको उसने ऑक्सीडाइज किया तो इससे ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड बना है. ये रिफ्लक्स में किया है. क्यों? क्योंकि we wanted to oxidize to completion. And then this one reaction is a condensation reaction. You're removing H and OH and the rest of it will be joined together. इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा. The OH will lose the H part and we will react it with C2H5. And this is what we are going to get at the end. And this is Q. This is an ester, right? This is an ester, sweet smelling compound, concentrated sulfuric acid to remove water. So there's plenty of hints in the question here. इसका commercial use क्या होगा? Perfumes बनाने में use हो सकता है, food flavors में use हो सकता है.
ठीक है, it can be used to dissolve other organic substances, so perfume, solvent, इस तरह से हम बता सकते हैं. Lucas reagent is a mixture of HCl and zinc chloride. Primary, secondary, tertiary alcohols can be distinguished by the reaction with Lucas reagent. Okay. Alcohol reacts with HCl to form halogen alkene, nucleophilic substitution, right? Zinc chloride acts as homogeneous catalyst for this reaction. Explain the term homogeneous. That basically means in the same phase. Phase is a better word, but if you want, you can also use the word state. Pentane-3-ol, secondary alcohol hai. By the way, will this react with the to show iodoform reaction? क्या ये करेगा वो वाला? No, sir. Why not? There's no CH3 with it. Yes, there's no CH3 with it. Yes. Okay. React slowly with HCl to form a secondary halogen alkane. Okay. Complete the equation. So HCl के साथ react करेगा. हमें C2H5 CHCl C2H5 मिल जाएगा. बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? So water? Water, yes. Can we tell what mechanism this will follow? SN1 or SN2? So SN2. How do you know? So it's a secondary carbon. And secondary carbons can do both of them. So how do you know one of them? We don't. So we don't know whether it will be SN1 or SN2 because it's a secondary carbon. If it was primary carbon, तो हमें पता है कि primary carbons क्या करते हैं? So कौन सा वाला only करते हैं? They prefer to do that. Yes, they can do both again, but one of them is much more likely to happen than the other. ठीक है? So primary or tertiary, the choice is clear. In secondary, it depends on the structure of the thing. It depends on the inductive effect. So we don't really know just by looking at it. The fastest reaction shown by Lucas reagent is with tertiary alcohol. ठीक है? Draw the structure of the tertiary alcohol. That's an isomer of pentane-3-ol. Pentane-3-ol का हमें करना है tertiary alcohol. So मतलब मेरे पास कार्बन्स होने चाहिए 3 साइड्स पे. ठीक है, और एक साइड पे OH होना चाहिए. अब मेरे पास कितने कार्बन है? पेंट है ना, तो मतलब I have 5 कार्बन्स. Out of those, I've already used 1. So मैं उसको 4 को कैसे split करूंगा? I can make 1, 1 and 2. So I can put C2H5, CH3, CH3. Right? Because I have 4 carbons and I need to split them in groups of 3. क्यों? क्योंकि ये tertiary है. तो मैं इसको इस तरह से 1, 1, 2 करके split कर दूंगा और 1, 1, 2 मैंने यहाँ पे join कर दिया. Is this a chiral carbon? No, sir. No, it's not because there are 2 identical groups here. Tertiary alcohols tend to react with Lucas reagent using the same mechanism as in their reaction with HCl. So there's the type of reaction. Again, they've not asked us for the mechanism, they've just asked us for type. So the type is substitution. Mechanism पूछता तो nucleophilic substitution. Again, we don't need to specify SN1 or SN2 even at that stage, unless they ask us to draw the diagram. Propanoic acid is reduced by lithium aluminum hydride. This is obviously done in ether. We cannot bring water here because water ke saath lithium aluminum hydride will explode. And this is reduction. Okay. Because it's an acid, it will reduce to alcohol. It will not reduce to aldehydes because it's a good reducing agent. And secondly, we cannot stop it midway. So we don't need to specify how exactly this happens. We will just use the general symbol for reducing agent here. So this will react with the reducing agent and make, there's 3 carbons now, so CH2OH plus H2O. इसको balance कर लेते हैं. How many hydrogen do I need? 4. Okay. Sir, one question, sir. Yes. अभी जैसे एक ये हम इक्वेशन कह रहे हैं ऊपर हमने और भी की थी, तो do we have to write state symbols while writing equations?
अगर उसे पूछे हो तो लिखने होते हैं, अगर उसने पूछे नहीं है तो क्या जरूरत है लिखने की? से फिर हम छोड़ सकते हैं ना अगर ना हो सके तो। They have not asked us. सही। Name the organic product formed. Organic product formed is this one, which is prop 1-ol. Please be very straightforward and clear about the isomer that you have. Just saying propanol shows कि आपने गौर नहीं किया, because ये prop 2-ol भी तो कोई उसको बोल सकता है, तो आपने स्पेसिफाई करना है कि कौन सा आइसोमर बन रहा है यहाँ पे. इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल. यस, सर प्रोपेनॉल भी नहीं लिख सकते? प्रोपेनॉल का मतलब prop 2-ol भी तो हो सकता है. सर कैसे सर? प्रोपेनॉल prop 1-ol भी होता है, prop 2-ol भी होता है. सही सही। Propene reacts with water in the presence of acid catalyst to form alcohol. Again, what is this reaction? Electrophilic addition. Do we need to mention that? No. Why? Because उसने हमसे पूछा है name the type of reaction. उसने mechanism जब पूछेगा तो हम बोलेंगे कि this is electrophilic addition. Right now we just say addition. Name the major organic product. Again, we'll use the Markovnikov's rule. Markovnikov's rule कहता है कि जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन और आ जाएंगे. ठीक है, यानी अगर आपके पास प्रोपीन में ऑब्वियसली इस तरह से होता है प्रोपीन, तो Markovnikov's rule को यूज करके हम बता सकते हैं that this carbon is more likely to get hydrogen. What is the reason for that? Of course, the underlying reason is that this being a secondary carbon has an inductive effect from two alkyl groups. And because of that, this is more stable carbocation जो यहाँ पे बनेगा. And the carbocation that is made here will be less stable. जिसकी वजह से major product में हमारे पास यहाँ पे OH आएगा, the more electronegative thing. And यहाँ पे इतना stable carbocation नहीं बनेगा, तो यहाँ पे hydrogen जाने के chances ज़्यादा हैं. So Markovnikov's rule और the underlying reasoning दोनों को use करके आप बता सकते हैं that the second carbon will get OH and the first will get hydrogen for the major product. It does not mean कि minor product बनेगा नहीं, बनेगा, but it's a minor product, मतलब वो कम amount में बनेगा. So what would be the minor product sir? Prop 1-ol. अच्छा सही। सर ये मेजर माइनर का क्या होता है इसमें इतना डिफरेंस? जो डिफरेंस ये होता है कि आपके पास दो आइसोमर्स बनते हैं, H और सही। OH ऐड हो रहा है ना, तो H is the slightly positive part of this, जो पहले ऐड होता है. अब वो अटैक कहां से हो रहा है? वो अटैक हो रहा है इन पाई क्लाउड्स की वजह से. अब ये पाई क्लाउड जब अटैक करेंगे तो या तो ये कार्बन H के साथ बॉन्ड करेगा या ये कार्बन H के साथ बॉन्ड करेगा. दिस वन इज मोस्ट लाइकली टू जस्ट स्टे एज कार्बोकैटायन एंड दिस वन इज मोर लाइकली टू रिएक्ट और बाइंड विद द H. तो जब ये H के साथ बाइंड कर जाएगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिस पे फिर वो OH अटैक करेगा और हमारे पास prop 2-ol बनेगा. माइनर प्रोडक्ट में इसके पास H आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा. ऑफ कोर्स द डबल बॉन्ड गोज अवे और अब OH इसको अटैक करेगा. ये वैसे एरो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी गेट इट. S is a secondary alcohol with formula C4H10O. ठीक है, तो but2ol हो सकता है. ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला. सो 4 कार्बन है तो but2ol हो सकता है, दूसरे पे OH है और बस. I have made a very minor mistake here. Can anybody identify what that is? The mistake is serious. क्योंकि अगर ये मिस्टेक हम एग्जाम में करेंगे, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, मार्क नहीं मिलेगा. Sir, O और H के बीच में like bond नहीं show हुआ, I guess. The bond between O and H should be shown. Yes. And of course, बाकी सब तो हाइड्रोजन हैं, वो लिखें तो बेहतर बात है. But the key point is understanding that O and H are separate and they're bonded with each other like that. Methanol is soluble in water because it forms hydrogen bond with water molecules. Draw a fully labeled diagram to show a hydrogen bond forms between a water molecule and a methanol molecule. इसका मतलब है कि पहले आपने water molecules और methanol दोनों को draw करने और फिर आपने उनके बीच में hydrogen bond दिखानी है. Hydrogen bond usually दो चीजों से दिखाते हैं हम. The slightly positive and negative charges, because hydrogen and oxygen should
have a polar bond, उसी से तो ये बनेगी यहाँ पे. And secondly, the dotted line between two molecules. So let me just draw them out. So I have methanol here. So slightly positive charge, slightly negative charge. And then I have water here. So water पे lone pairs होंगे. Slightly negative charge, slightly positive charge on both the hydrogens. And this dotted line is showing the hydrogen bond. Okay. Have I fulfilled all the requirements? इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था उसने वो मैंने सब बता दिया. I have not labeled it. So I will identify this to be the hydrogen bond. बस बाकी तो pretty clear है ना. Partial charges भी नजर आ रहे हैं. बस वो dotted line को हमने specify करना. सर अगर हम एग्जाम में जैसे H ना शो करें सिर्फ बॉन्ड शो करें फर्क तो नहीं पड़ता ना. What do you mean? जो जैसे मिथाइल आपका लेफ्ट पे जो है CH3 उस पे हमने H नहीं शो किया हुआ. It's recommended कि आप हाइड्रोजन लिखें, लेकिन अगर आप इसी तरह आंसर दे देते हैं तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल तो काम की बातें सारी आपने बता दी हैं. सही. तो वो आपके यहां से नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेंशन ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स अगर उसने मांगी. Compound B is a liquid with fruity smell, ester है. The reaction scheme shows how B can be made from ethanol. So we starting with ethanol, 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, और उससे अल्टीमेटली हम ये चीज बना रहे हैं. ओके, लेट्स सी. एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे. Will I use reflux to make carboxylic acid? Yes, sir. Yes. So this is oxidation under reflux. Heat भी करेंगे इसको obviously. Oxidizing agent, कोई strong oxidizing agent like KMnO4 या potassium dichromate. By the way, potassium dichromate is extensively used. तो अक्सर जगहों पे आप सिर्फ उसी को ही लिख सकते हो. There are cases जहाँ पे potassium manganate is not as effective, but dichromate is. That is why, just to be safe, मैं तो हर जगह dichromate ही डाल देता होता हूँ. अच्छा, अब यहाँ पर you have this thing, and then reaction 2 से क्या हुआ कि वहां पे carboxylic acid के साथ Br आ गया. Now common mistake by looking at this might be कि students कहेंगे अच्छा OH है तो वो substitute हो गया, but technically substitute नहीं हुआ है. OH substitute नहीं हुआ है. क्या substitute हुआ है? Yeah. No, Br has come in, but what has it substituted? किसकी जगह पे आया वो? Hydrogen. Hydrogen. So this is free radical substitution. And then this one is reacting with ethanol in presence of sulfuric acid. So sulfuric acid is acting as a dehydrating agent, and they're removing H and OH, and they're getting water as a byproduct as well as an ester, the fruity smelly thing. So that is esterification, condensation. Give the reagents and conditions required for reaction 1. So reaction 1 is oxidation. So acidified K2Cr2O7. Conditions क्या है? Heat under reflux. अच्छा, मजे की बात बताता हूँ. Technically, acidified is also condition. Or the reagent is just this part. But if you mention it here, और यहाँ पे आप नहीं लिखते, तो that is fine. लेकिन अगर आप इसको mention करते ही नहीं है, तो फिर ये reaction नहीं चलेगा. So ये बात पूरी लिखना अच्छी बात है, ये बात भी लिखना अच्छी बात है. हाँ, ये यहाँ पे लिखेंगे तो कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि टेक्निकली तो ये कंडीशन नहीं है. Construct an equation to represent reaction 1. ठीक है. So C2H5OH plus oxidizing agent makes C2H5COOH. Is there a byproduct? There is water. And I've removed 2 hydrogen, added 2 oxygen. ठीक है. एक oxygen carbon के साथ और एक oxygen यहाँ पे. Suggest the type of reaction that occurs in reaction 2 substitution. Again, उसने mechanism नहीं मांगा है तो मैं extra बातें नहीं लिखूंगा.
H2SO4 acts as a homogeneous catalyst. We have already talked about it. They are in the same phase. That's why it's homogeneous. Okay, all right. This shows how butane 1-ol can be made from 1 bromopropane in 3 steps. Okay, let's go over it. I have 1 bromopropane. जैसे ही मैंने इसको देखा है मेरे पास हैलोजन है, तो मुझे पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली ये हाइड्रोकार्बन वाली चेन जो है, दिस कैन डू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो 2 यहाँ पे हो सकते हैं, एडिशन नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड नहीं है. अच्छा, अब ब्रोमीन की जगह पे CN नाइट्राइल ग्रुप आ गया, सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट. सो नाइट्राइल ग्रुप आ गया. नाइट्राइल ग्रुप के आने से the carbon chain increases by 1 carbon. So here I had 3 carbons and now I will have 1, 2, 3, 4 carbons. So this one is bromopropane. Yeah, 1 bromopropane. And this one is butane nitrile. Not propane anymore. Butane nitrile. अच्छा, उसके बाद इस नाइट्राइल को उसने somehow carboxylic acid में convert कर दिया. How does that work? We have not studied it yet. हमने amines को भी नहीं पढ़ा है. So that is fine. For step 2, I would suggest अभी आप परेशान नहीं हो. Just skip this step 2 for now. Okay. Now this one converts to this. And what is that clearly? Carboxylic acid has been reduced to alcohol. So do you understand why they had to go through this whole process? वरना तो OH Br की जगह पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी तो कर सकते हैं हम. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लेते तो डायरेक्टली Br की जगह पे OH आ जाता. But तो sir, इसने you wanted इतना the लंबा extra प्रोसेस क्यों carbon, किया है? extra carbon. Yes, they needed but 1-ol and they were starting with the propane derivative. So they needed the extra carbon. That is why they had to go through this whole process of first substituting cyanide, then doing a reaction that we have not studied this one, and then eventually getting there. Okay, step 3 is a reduction reaction. We know carboxylic acid is converting to primary alcohol. Construct an equation for the reduction setup. Okay, so we can use lithium aluminum hydride या tetrahydroaluminate भी बोलते हैं उसको. We can use that in ether to do this. कैसे होगा? First of all, I have C. Do I need to draw the structural formula? अच्छा, कोई भी formula use कर सकता हूँ, तो I can just say C3H7COOH plus reducing agent makes C4H9OH plus water. Okay. And how many hydrogen have I added? 4? Yeah. ठीक है. अगर आप ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे, अगर आप पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज गुड केमिस्ट्री. आप स्केलेटल फॉर्मूला भी लिख सकते हो. मतलब आप ये जो बात मैंने पूरी लिखी है ना, इट डज नॉट स्पेसिफाई कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ब्रांचेस हैं कि नहीं है. सो ये थोड़ी सी रुकी आंसर है, ये एक लो लेवल आंसर है जो मैंने आंसर अभी दिया. अगर आपने अच्छा आंसर देना है तो वो क्या होगा कि आप या तो यहीं से इसको कॉपी कर लो कि मेरे पास यहाँ पे ये है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा, 4th है वो, सो इससे मेरे पास ये बनेगा प्लस वाटर. तो ये एक बेहतर आंसर है. अगर आपने ये भी नहीं करना तो आप ऑब्वियसली स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हो. Sir, aren't only 2 hydrogens being added though? No. Are you sure? So, yeah, this oxygen is gone and replaced by 2 hydrogens, and this is then reacting with 2 hydrogen to make water. So 4 आ गए ना, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. State the identity of reducing agent. Again, a strong reducing agent is lithium aluminum hydride. तो मैं हमेशा ये लिख दूंगा in ether. So do you see that in most of the question you can just get away by putting acidified potassium dichromate and lithium tetrahydroaluminate as the reducing agent and oxidizing agent. Next question. The functional group in G is an oxygen atom bonded to 2 carbon. This is called an ether group. G, H and J are structural isomers with molecular formula C4H10O. ठीक है. H and J are straight chain molecules. ठीक है.
boiling point and reaction Ga, H and J when heated under flux with, ठीक है. अच्छा, heated under flux का मतलब है कि oxidation हो रही है of K2Cr2O7 which shows orange to green अगर वो oxidize होता है. G does not oxidize, so that's why it remains as it is. But H and J oxidize, and I have OH here, so I can think that H and J are alcohols because they can be oxidized and they are primary or secondary alcohols. Tertiary alcohol hota to wo oxidize nahi hota. And G being an ether cannot be oxidized. Identify the type of structural isomer shown between G and H. So G में क्या है कि O is between the two carbons and H में it is OH. एक side पे carbon है, एक side पे H है. So that is functional group isomers. Identify the type of structural isomerism shown between H and J. Because both of them are OH, so that will be कि उसकी placement change हुई है. ठीक है? So that is position isomer. Draw a possible structure. Now remember, H has a higher boiling point. जिसका मतलब ये हुआ कि H is, it has a longer chain because the more branches you have, the lower the boiling point and more spherical the structure. So H will definitely have a longer chain. So 4 carbon है तो 4 की chain बना दूंगा मैं और वहां पे OH एक पे लगा दिया. बट अगले में मैं 3 की chain बना दूंगा और मैं ये ले बन गई. ठीक है, तो बन गया. क्लियर? अच्छा, अगर नहीं, वेट अ मिनट, तो ये तो पोजीशन आइसोमर के अलावा चेन आइसोमर्स भी बन गया. मुझे पोजीशन आइसोमर बनाना है तो ये 4 की ही चेन होगी फिर, बट OH फिर मैं सेकंड पे डाल दूंगा क्योंकि अगर मुझे क्योंकि वो टर्शियरी कार्बन हो जाता और वो ऑक्सीडाइज भी ना होता, तो इसलिए दिस वन इज द वन आई हैव. सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल है. अच्छा, इसका नाम भी बताना है. दिस वन इज ब्यूट 1-ol and this one is ब्यूट 2-ol. All right, so we're done with this worksheet. And I hope you understand how alcohols behave and what their properties and structures and reactions are like. Okay, see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.